Education is a key to unlock the doors of the opportunity and the pathway to a brighter future. Ladies and gentlemen, esteemed guests, and the fellow supporters, I am Rejuta Sharma, Assistant Professor at St. PG College for Girls. It is both an honor and privilege to stand before you here to address a topic of the utmost significance, role of technology in future. जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बहुत ही वे में हम यूज कर रहे हैं इसको मेडिकल साइंसेस से लेके एजुकेशन फील्ड हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बट उसका एक मेजर रोल हमें एक एजुकेशन सिस्टम में भी देखने को मिलता है जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं एजुकेशनल टूल्स हैं इंटरैक्टिव सेशंस हम इंटरैक्ट करवा सकते हैं बच्चों के लिए जिससे हमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है कुछ भी सीखने का सिखाने का तो ये सारी चीजें हमारे लिए टेक्नोलॉजी लेके आती है आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर esteemed guests those who are present here first of all our first speaker is Mrs. Soniya Mishra ma'am welcome ma'am Mrs. Soniya is member of the management committee at the Central Academic School Jaipur where she has been actively contributing 2018. In 2015, she graduated with a Master of Arts in French from the University of Rajasthan. With extensive experience in early childhood education, she has worked in three schools in France with students in the primary section. Soniya ma'am has been a frequent speaker at various educational events and summits. Let's give a warm welcome to the ma'am for sharing his wealth of knowledge and with us today. Our next speaker is Dr. Ashwini Sharma sir. Dr. Ashwini sir is the acting director at the Institute of Management at J.K. Lakshmi University. With 23 plus years of experience, he excels in the information technology and information system, data analytics, and the general management. As a freelancer, he has developed information systems for various industries. Ashwini sir is actively involved in academia, serving on the boards of studies for several institutes. A member of esteemed professional bodies, he has authored 50 plus publications and won Best Research Paper Award at international and national conferences. Please join me in welcoming Ashwini sir. There is one more guest, Professor Archana Srivastava. She is on her way, so as soon as she will join, we will connect. So by the time I can start the session, so we will be talking about the role of technology in future. So I will be asking you questions to our speakers. Let's begin the session. So my first question is to the Soniya ma'am. How can technology ensure equal access to education, especially in the remote areas with a limited connectivity? Good afternoon. The topic for today is role of technology in the future. As we all know that technology has been invented by humans to facilitate the day-to-day activities and everything to make it very easy in daily life. Now, let's talk about the purpose of technology first. The purpose of technology has always been to meet the needs, human needs, and with that, we come to education and technology. As I am connected to school education, I can very confidently say that the technology in schools has gained momentum. Now, to highlight this, educational technology has always been priority. We have now to actually make it work with students. We have radio broadcasts, we have television programs, then we have so the radio broadcasts and television programs ensure very much that the information reaches everyone, irrespective of the age, creed, caste, anything of that matter. So technology can also be used by students, staff to download, purchase, and use different applications
to facilitate learning. So that is what my point of view is on that question. So as ma'am has explained, like for the remote areas, we have different online platforms that are available in the market. Like through the web, we can download some stuff. We can learn from the YouTube and other social media platforms that are available. So that's it. My next question is to the Ashwini sir. क्या टेक्नोलॉजी भविष्य में टीचर्स को रिप्लेस कर सकती है क्या? I would like to ask. Okay. So at the outset, I would thank the organizers for inviting us over here and holding this such a relevant panel discussion on a very contemporary topic. Rejuta मैम पूछ रही है टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस कर रहा है. What is the view of the audience? Do you really think so? नहीं कर पाए. So before we delve into this, it's worthwhile to understand what is the real role of a teacher. एक शिक्षक सिर्फ information provider नहीं. A teacher is not only there to impart knowledge to his or her students. To my mind, the real role of a teacher goes much beyond than imparting knowledge or providing information. हाँ, यदि हम ये सोचते हैं कि टीचर का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी आने वाले समय के अंदर कुछ हद तक टीचर्स का वह रोल अपने आप पर ले. लेकिन जब हम बात करते हैं टीचर की, तो टीचर इज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग. He or she provides instructions, he or she facilitates learning through developing contents, through delivering contents, through assessing where his or her students are finding it difficult. A teacher also has to play the role of a mentor, a role model. हम वही देखते हैं जो हम हमारे टीचर्स को करता हुआ पाते हैं, इसलिए एक टीचर की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. Teacher is somebody who also has to instill curiosity in the minds of the student. जब तक विषय को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाएगा, जब तक छात्रों में वो जिज्ञासा विकसित नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर अपने मिशन के अंदर अपने कार्य में सफल हो पाए. लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रति जो प्रेम है, लव फॉर लर्निंग जो है, वो एक टीचर ही डेवलप करेगा. तो इन रोल्स को यदि हम ध्यान में रखें, यह संभव है कि टेक्नोलॉजी काफी हद तक कॉम्प्लीमेंट करेगा. सो इट इज नॉट ईदर और वाली स्थिति नहीं है, टेक्नोलॉजी और टीचर. In fact, it is and technology and teacher. तो जहां तक सवाल उठता है कि रिप्लेस करेगी, नहीं, मुझे नहीं लगता. इट इज अनलाइकली टू रिप्लेस द टीचर्स इन फ्यूचर. टीचर्स का रोल टेक्नोलॉजी के आने के बाद निश्चित तौर पर परिवर्तित होगा. दैट इज माय व्यू. थैंक यू. जैसे कि अश्विनी सर ने कहा कि टीचर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. Obviously, there is so much of other tasks that a teacher can do which a technology cannot do. It is just a platform to enhance the things. My next question is to Soniya ma'am. Can you give an example of the artificial intelligence, how it is like supporting the teachers in a personalized instructions? Yes, definitely. So, artificial intelligence, as we know, is the major tool of help for the teachers. Now, when we talk about students and teachers and how the teachers are facilitated through artificial intelligence, guidance is the main topic here. Now, through guidance, teachers are able to help the students in using artificial intelligence, right? So, when the teachers are very well equipped and aware of artificial intelligence, the students automatically can benefit from it. Now, here, the main is that the teachers need
to be very well, thoroughly aware of how to inculcate artificial intelligence. Now we have applications like Kuber, which helps in grading, automatic grading of the performance of children. Then we have another application which is a yellow marker that automatically highlights the main points in the books and summarizes the chapters for the students to facilitate learning. So there are many such applications through artificial intelligence which we can use for teachers, and in turn the teachers can help the students to learn. Thank you, ma'am. As you all know, artificial intelligence, हम जितनी बात कर रहे हैं इससे ज़्यादा इसका रोल है. Being a student, being a teacher, I have observed it. Like whenever I was a student, I need to I take the data from the internet and then use it in my studies. As a teacher now, I have taken I have used various applications which are available on the internet, which is based on the AI. Only the first thing which I do is like a chat GPT. You all are aware of the chat GPT. It is a great platform which gives you a combined information of all the things. Whatever the question you will ask, it will give you the information. And obviously, there are some other tools as well, which is based on the AI that can provide us different information as per our requirements. My next question is to Ashwini sir. How does technology help students who struggle with a certain subjects? Okay. So I can see some students over here. Can some of you identify those challenging subjects which the moderator has been mentioned? कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कौन से विषय ऐसे हैं जो लगता है आपको डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, कॉम्प्लेक्स है, जहां हाथ थोड़ा सा तंग रहता है? Few teachers are also here. कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं? Science, maths. Okay. I'll share a personal story. When I was in my primary school days, there was this approach of fractions को simplify किया जाता है. एक numerator है, एक denominator है. ठीक है, दो नंबर सामने दिख रहे हैं, बीच में एक लाइन है. उन दो नंबर के अलावा आपको एक तीसरा नंबर सोचना. वो तीसरा नंबर ऐसा होना चाहिए जो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड. उस तीसरे नंबर से मेंटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है. जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर करना है, जो क्वोशिएंट आ रहे हैं वो ऊपर वाले को काट के उसके ऊपर लिखना है, नीचे वाले नंबर को काट के उसके नीचे. आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इन दैट. बड़ी समस्या है जी. उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी. तो हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, उनके पास में जाकर मैंने बात करी. करीब पूरी क्लास जो है वो सीख चुकी थी वो कैंसिलेशन. 44/12 लिखा, इसने 4 से 44 को डिवाइड करके 11 को डिवाइड करके 3 लिख दिया, नीचे सिंपलीफाई हो गया. आई वाज स्ट्रगलिंग ओवर दैट. थैंक्स टू माय मैथमेटिक्स टीचर इन दोस डेज, उन्होंने पहले मुझे वो फ्रैक्शन का जो कांसेप्ट होता है वो रिविजिट किया. सो द प्रॉब्लम वाज नॉट in how to cancel or how to think of a third number which can divide the numerator and the denominator. The challenge was perhaps the basics that were needed to solve that problem were missing. So back to basics, जिसको हम कहते हैं, उन concepts के ऊपर वापस से थोड़ा समय देता है. तो जो आप बोल रहे हैं 5/1 तो 5 का एक ही हिस्सा है, 5/2 तो 5 के दो हिस्से हो. 5/3 तो 5 के 3 हिस्से करना है. वहां से जब वो फ्रैक्शंस का एक्चुअल अर्थ समझाया गया, उसके बाद में कैंसिलेशन, उसके बाद में डिविजिबिलिटी, वहां से लेकर जब फिर हम उस विषय को अप्रोच किया तो थोड़ा सा सरल हो गया. अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्रकार के चैलेंजेस को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. People, some students they are good at numbers, some people they are good at narratives, some people they are good at visuals.
Some people like to learn through videos. Some people like to learn through presentation. So technology can adapt itself. We have solutions that can be adapted to the different learning styles of students. Instant फीडबैक मिल सकता है, जैसा मैडम बता रही थी, असेसमेंट के लिए कई सारे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सो दे कैन गिव यू द फीडबैक। फीडबैक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नंबर कितने आए ये बता दिया गया। फीडबैक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग वेयर द स्टूडेंट इज लैकिंग। तो कहाँ कौन से ग्रे एरियाज हैं, कौन से वीकर पॉइंट्स हैं, जहां ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत है, जहां अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है, वो अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बेहतर कर सकते हैं। सो अगेन, जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि टीचर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है इंडिविजुअलाइज लर्निंग को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब और बेहतर बनाया जा सकता है। Thank you, Ashwini sir. I would like to welcome Professor Archana Srivastava ji as she has just joined. I would like to give a brief about the Archana ma'am. She is an alumna of the National School of Drama (NSD). Currently heads the Department of Dramatics at the University of Rajasthan. With diverse expertise in theatre and the public administration, she excelled as a grade A+ artist on All India Radio and Doordarshan. Her career encompasses directing, designing, scripting numerous plays, along with a substantial contribution to workshops and conferences. She has been recognized with various awards and showcasing a significant impact on both theatre and education. Let's extend a hearty welcome to Mrs. Archana as she impacts to deliver this academic today. So, Archana ma'am, I would like to ask a question to you. What are the potential drawbacks of relying heavily on the technology for education in future? Like अगर हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आपकी इसके पर क्या विचार? सबसे पहली व्यथा तो देर से आने के लिए मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि ये जो जितना भी डेवलपमेंट है, तकनीकी विकास है या नगरीय विकास है, इतनी तमाम गाड़ियाँ इस कदर मतलब बहुत खतरनाक मंजर है पूरे हमारे शहर का इस वक्त। और 1 घंटा हुआ है मुझे निकले हुए, यूनिवर्सिटी से आई हूँ मैं, उसके बाद लगातार जैम। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया हमारे लिए कि कैसे हम अपने आप को स्थापित कर पाए जिंदगी में। यहाँ हम बात कर रहे हैं तकनीकी विकास इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन की जहाँ तक बात है, उसमें मैं तकनीकी विरोधी नहीं हूँ, सबसे पहले तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, हर एक जगह इतनी अति हो रही है कि हम अपनी जिंदगी जीना भूल चुके हैं। हम फुली डिपेंडेंट हो गए किस पर? सिर्फ और स्क्रीन पर, कभी मोबाइल पर। आलम ये है साहब कि हम नहाने जाते हैं तो भी हमारा मोबाइल हमारे साथ बाथरूम में जाता है। कितनी बार तो पानी में गिर चुका है कितने लोगों का मोबाइल, कितनी बार टॉयलेट में गिर चुका है लोगों का मोबाइल। इस कदर अपनी दौड़ जो तकनीक की हो रही है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ और ये हमको हर तरीके से बहुत ही कुंद कर रही है, हमारी मानसिकता को, हमारी फिजिकल एबिलिटी को, सबको ये बिल्कुल जड़ कर रही है। तो ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव मैं देख पा रही हूँ अभी अपने आसपास, क्योंकि मैं भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, न सिर्फ एजुकेशन में बल्कि समाज में भी, आसपास भी अगर हम देखें तो यही आलम में भी दिखाई देता है। हमारी सारी शक्तियां जो हमें ईश्वर प्रदत्त है, जो हमारी, हम कहते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कहाँ गई वो ज्ञानेंद्रियां? बिल्कुल खात्मे पे है। तो बेटा ये बहुत बड़ा खतरा मुझे नजर आ रहा है। Thank you so much, ma'am. As she said, too much of everything is bad. So we need to use the technology wisely. My next question is to Soniya ma'am. What measures can be taken to address concern about student privacy in the digital learning environment? So student privacy is our utmost priority. Any educational institution's priority is privacy in all terms, in terms of documents, in terms of student information, staff information. Anything that is related to the school has to be secured.
Now, privacy also depends not only on the educational institution but on myself as well. We have to have strong passwords. The parents need to be vigilant of their children's activities. बच्चे किससे सोशल मीडिया पे बात करते हैं क्या शेयर करते हैं this is all in parents hands as well, so strict vigilance. Then one more point that it is not one person's duty. The students, the educators, the educational technology, and the cyber security people, the parents, everybody has to have a united effort in terms of privacy for the student data. Again, the students must consider their own responsibility in sharing their information. None of the educational institution would want to breach their security or would want to leak any sort of data. But if the students themselves are not aware, or if there is not much vigilance on them, because they are so naive, mistakes do happen. And इसके लिए सबसे important बात ये है awareness. We have to be aware of what we are doing. You have to have a sense of responsibility, and then only you can secure your data. Also, as Ma'am said, that a lot of usage of internet and mobile phones does not do us any good. Technology was invented for our, I can say, to facilitate, make our lives easy and not difficult. But because we are using it a lot and the whole that, it sort of stunts the growth of it. So, as far as privacy is concerned, we have to be very careful of what we share with other people. Thank you, ma'am. As ma'am said, it is just not a responsibility of the student, like it is a responsibility of the family members and the other people around them, that which information they want to share with the other people. Like, it must be a student must have responsibility for data that person is sharing with the other people. Thank you. My next question is to Ashwini sir. Will everyone have this technology in the future of education? Okay. The accessibility to affordable technology as far as education is concerned, we have it today as well. Whatever the students need, they already have access. But talking about social or socio-economic status and geographical boundaries, there are certain pockets of the society which still do not have access to affordable technology. It's a big ask. It's a long order. It's going to take some time. But yes, the governments, the educational institutions, the policymakers, they are trying their level best to make technology available to each and every individual, despite of the differences. So the digital divide is disappearing. Despite having differences in the socio-economic status, despite having geographical limitations, today is better than yesterday, and tomorrow would certainly be better. That is what I can say. Thank you. Thank you, sir. My next question is to Archana ma'am. How might technological advancement in the future impact students' academic performance negatively? जैसा कि अभी आपने कहा सोनिया ने कि जो हमारी जो तकनीकी विकास है या जो भी हमारी डेवलपमेंट है हमारी जिंदगी है, ये सब हमें आराम देने के लिए, सुविधा देने के लिए, हमें जिंदगी को आराम से जीने के लिए। लेकिन हम जब इसका बहुत ज्यादा उपयोग, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा जब इसका प्रयोग कर रहे हैं, अब तो एआई आ गया है, आपको हर एक सवाल का जवाब हाथों हाथ मिल जाता है, हमको क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज को आर्टिफिशियली हमको बताया जा रहा है। यानी कि अब जो बुद्धिमत्ता है वो भी कृत्रिम हो गई है इस टेक्नोलॉजी के जरिए। तो ये वाकई में हमारे पढ़ते बच्चों के लिए
बहुत बहुत ज्यादा घातक है। और हमारी जो ग्रोथ है, जो एकेडमिक ग्रोथ एक जमाने में सच्चाई के साथ होती थी, वो अभी नहीं हो पाएगी। और हमारा कॉमन सेंस, हमारा क्या कहते हैं उसको, मिनिमम जो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडी, वो भी इससे प्रभावित होता है। तो वाकई में हमें वही बात कि हमें संतुलित तरीके से इसको इस्तेमाल करने की समझ होना बहुत जरूरी है। Thank you, ma'am. I would like to add something into that. जैसे कि मैम ने बोला कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खोलती भी है, बट अगर उसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हमारे लिए घातक भी है। आज के टाइम पे as being a teacher, I also have seen so many students those who are using the technology in different manners. So हम उस चीज को कंट्रोल भी एक लेवल तक कर सकते हैं, it is just solely and sole responsibility of the student as their adults as well. They need to understand कि क्या चीज उनके लिए अच्छी है, क्या चीज उसके लिए बुरी है. I would like to ask my next question to Ms. Sonia. How has technology impacted the mode of learning, and will it replace traditionally teaching strategies? So, yes, and technology has really extremely deep-rooted impacted the way we learn. I remember when I was in school and sometimes we used to get stuck some question. That time we had computers and no mobile phones, no laptops. And if there was some questions, some mathematics, some science question, something I would call my friend on the landline. And whatever information she would give me, I would believe it. The next day I would write that. Now, that's not the same case nowadays. You have your phones, you have your laptops, and at the ease of a click, you can easily find answers to your questions. So, now, when it comes to teaching, technology and teaching go hand in hand. It is impossible to live without technology, and the only thing that we can do is limit our access to internet and to other sources of technology. Watching too much of television or even listening to too much of music or even just scrolling through your phone is not going to help you so much. But of course, sometimes what happens is while you are going through all of these things, you tend to catch something that is useful to you. So now the person uh, who is able to absorb the best of technology is the winner. And because there are all sorts of information out there. What we take in and what we leave out is very important. Then old school technology, or old school teaching is not going to be really replaced because we are social beings. We want human contact. So when we talk to our teacher, it is not only that we are learning something from the teacher, we are also um, discussing our problems, and the teacher acts as a counselor. Now, of course, ChatGPT, for example, you can ask so many questions and you will get all the answers. But it is not a conversation in person. So yes, it is good, but it does not really satisfy your curiosity. So I think it has AI has somehow replaced the way we have learned, the way we are learning, but not completely. And it would also not be healthy if we are completely going to replace teachers by AI. Not for the students and not for anybody else. Thank you, ma'am. I would like to ask this question to Ashwini sir. To what extent can technology facilitate individualized learning, allowing students to progress at their own pace? In fact, the very basic aspect of using technology for learning is to have individualized, to match the individualized learning. There are adaptive platforms available which can modify the contents, which can
base the content to suit the special needs or diverse needs of the students. तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप आसानी से, आप सरलता से आपकी जो लर्निंग स्टाइल्स, उन लर्निंग स्टाइल्स को मैच करते हुए कंटेंट्स आपको उपलब्ध होंगे, आपको आसानी से आपकी जो एजुकेशन जर्नी है उसके अंदर मदद करेंगे। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी वो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस प्रदान करते हैं जो कि शायद क्लासरूम सेटिंग के अंदर संभव ना हो पाए। सिमिलरली, जैसा मैंने पहले कहा था कि there are students who are better in learning through the narratives. There are students who are better to learn through videos or through audio clips. So there are these multiple platforms available, these multiple modes available through which the students can enhance their learning. Thank you, sir. My last question is to Archana ma'am. भविष्य में क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का इंकॉर्पोरेट करने के क्या पॉसिबल रिस्पॉन्स हो सकते हैं? दरअसल ये सारे सवालात इतने घुले मिले हैं कि अंततः वही सारी बातें हैं। नुकसान के तौर पे मैं तो ये देख पा रही हूँ कि किसी भी एक जीवंत व्यक्ति का स्थान कभी भी कोई तकनीक नहीं ले सकती। टीचर का जो स्थान है, टीचर की जो मौजूदगी है, उसका जो अस्तित्व है, उसको कोई तकनीक रिप्लेस नहीं कर सकती। आपको आसानी हो जाएगी, आपको एक साधन मिल रहा है तकनीक के तौर पे, आप अच्छे से अपनी जिंदगी को उससे जोड़ के अपनी जिंदगी को एजुकेट कर सकते हैं, आगे पढ़ाई में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टीचर की मौजूदगी बहुत सशक्त होती है और वही हमें बहुत सारे रास्ते दिखाती है। दूसरी चीज जो अभी की स्थिति है वो ये है कि बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी, जरा सी इतनी सी भी कुछ भी प्रॉब्लम है उन्हें लगता है पता नहीं दुनिया इधर की उधर होगी। पुरानी, जैसे कि आपने कहा सोनिया ने, जो प्राचीन हमारी प्रणाली है, जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, जिसको आज की तारीख में टीचर और स्टूडेंट की जो हमारी क्लासरूम की जो एक कहेंगे रिलेशनशिप है, वो बहुत अहम इस रूप में है कि हम आसानी से एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं। आपको तकनीक उसका वो समाधान नहीं दे सकती जो एक जीवंत व्यक्ति आपको तकनीक की जगह उसका समाधान दे सकता है। तो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, टीचर के अस्तित्व को तो मैं कभी भी नकार नहीं सकती। और खासतौर से मेरा जो सब्जेक्ट है नाट्य कला, रंगमंच, थिएटर, उसमें तो सिवाय संवाद के और एक जीवंत जो प्रस्तुति है उसके अलावा हम अगर उसको अभी कोरोना के टाइम में हमने किया था इस काम को, वर्चुअल परफॉर्मेंस भी हमने की थी, लेकिन उसमें वो बात ही नहीं थी, उसमें वो तालीम हुई नहीं सकती। हाँ ठीक है, सोशल साइंसेस में हो सकती है और तमाम चीजों में थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके साइंस हो चाहे मैथ्स हो चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, कुछ भी हो, हर एक चीज में टीचर की मौजूदगी बहुत जरूरी है। नहीं तो विद्यार्थी सर्वदा तकनीक के साथ अकेला पड़ जाता है। Very true, ma'am. So, before we end this session, I welcome you all from the audience to ask our panelists any questions you have. Any general question you have, you need to ask to the panelist. Yes, please. Good evening, sir. I would like to ask Ashwini, sir. Students continue to benefit from educational technology. Will you introduce yourself? Sir, my name is Rejuta from Saint Joseph Physical College. So, मेरा question ये है कि students continue to benefit from educational technology. What more is in store for children to look forward to in terms of AI? Can you elaborate the second part of your question? What more is in store for children to look forward to in terms of AI? In terms of AI. Okay. सुनिया मैम ने बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैम ने यहाँ पर बताया उसके परिणाम, दुष्प्रभाव, सारी चीजें। We cannot go much beyond the way the technology has been developed so far. So it's really very difficult to see what is going to happen in the further future. The technologies that we have available with us
today for the students in various disciplines, having an eye on the ill effects of those technologies, they are sufficient. ठीक, तो भविष्य में क्या टेक्नोलॉजीज आएगी, जहां तक एजुकेशन का सवाल है, there are platforms available which can meet your present day requirements. Focus on the fundamentals, focus on the basics, because you will not get time for those things in the days to come. तो जब तक आप फंडामेंटल्स के ऊपर, जब तक आप आधारभूत जो सिद्धांत है उनके ऊपर फोकस करें, आने वाला भविष्य के अंदर जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो इतनी तेजी से विकसित होंगी, लेकिन उनका बेस, उनका आधार यही रहेगा. So focus on the fundamentals at this stage rather than worrying about what technologies are going to come in the future. As far as the application of technology in education is concerned. ठीक है. I would like to ask a personal question to all the three panelists. Like, what your views on? Like, आप सभी को पता है कि AI हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा like simple और easy बना रही है. But it is also impacting on the jobs of the other people. So, what your views on that? So industrialization हुआ, मैनुअल लेबर ने सोचा था हमारी नौकरियां चली जाएंगी. कंप्यूटराइजेशन हुआ, बैंक्स के अंदर एम्प्लॉइज ने हड़ताल करी, बोला साहब हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ काम करेंगे, हम कैसे काम करेंगे. ना मैनुअल लेबर से रिप्लेस हुए, ना कंप्यूटराइजेशन के कारण किसी भी एक बैंक एम्प्लॉय की नौकरी गई. आवश्यकता है नए तरीके से काम, आवश्यकता है नए स्किल सेट्स डेवलप करने की. यदि आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की दुहाई देने में टेक्नोलॉजी ने जॉब खा लिया, तो समस्या हमारे साथ, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं. सो हर विकास, हर डेवलपमेंट के अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू मिलेंगे. चाहे वो एटॉमिक एनर्जी की डिस्कवरी हो, आप चाहे तो उससे एटॉमिक पावर प्लांट बनाएं, आप चाहे तो उससे एटॉमिक बॉम्ब बनाएं. The choices with the mankind, choices with us humans. So if we are responsible use of the technology, then the sky is no longer the limit. So jobs, technology स्वयं, jobs, आपका जो inertia है, आपका जो resistance towards change है, उसके कारण you will suffer loss of job. Would you like to add something? जैसा कि अश्विनी ने बिल्कुल सही कहा, हमें अपने आप को अपडेटेड तो करना ही होगा, स्किल को हमको समझना होगा, सीखना होगा. और बिल्कुल तय बात है कि किसी की भी नौकरी गई नहीं है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है. तो निश्चित तौर पे हमें और अपने आप को एनहांस करना होगा, नई स्किल्स को अपने को एक्सप्लोर करना होगा. तो निश्चित तौर पे हम लोग उसमें फिट इन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है. So this is where experimentation comes in, right? We are supposed to start when we are this much. हम बचपन से ही टेक्नोलॉजी से पढ़ते थे, schools के through, and I don't think by the time we are ready to go, I don't think any of us would be technologically challenged and face such a problem in jobs. So people maybe have perhaps lost their jobs, unfortunately. Have to come up with the tools of technology. There are some things, there are few things we cannot control it, like, and technology is one of them. The more you walk with it hand in hand, the more you are going to progress. So that is what happens. Thank you so much. So as we bring this to a close, I want to emphasize that technology is like a bridge that connects what you already know and its possibilities of that. It is crucial to use it wisely. We discussed the good part and talked about the different concerns. Let's adapt and use technology wisely for a productive future.
educational future. I would like to give a big thanks to our speaker for sharing your valuable thoughts. Your time and attention means a lot to me. And I would like to give a special thanks to the Credent TV, to Sunil, to Gaurav sir for providing this platform, and my mentor, Mrs. Shubha Sharma, for giving this platform and trusting me for this. Thank you so much. Have a good day. Thank you so much for sharing your beneficial views. We are really benefited from your words. I would like to request our Principal Professor Dr. Gaurav Kataria ji, Dr. Mahendra Madhu ji, and Editor-in-Chief of Credent TV, Mr. Sunil Narnaulia ji, to kindly come on stage and felicitate our guests. It was a very knowledgeable session. We shall have a round of applause for our guests for sharing such things. I would like to continue to hear the noise of applause while our guests are being felicitated. Kindly have a big round of applause. यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि क्रेडिट टीम उसके पर्याय उसके जो बिल्कुल योद्धा सुनील नारनोलिया से मेरे भाई इन्होंने जब शुरुआत की थी कोरोना के समय में मतलब मैं तब से इनके साथ हूँ तो निश्चित तौर पे अभी मैं तकनीक को ये नहीं कह सकती कि नकारात्मक है वो सकारात्मक है कि हम लोग जुड़े इस समय और उसी की वजह से आज हम लाइव आपके सामने खड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया ये जो रिश्ता है तकनीक की देखी है कि तब हम लोग मुलाकात हुई आज ये देखी बहुत रिश्ता से छोटे भाई की तरह आप प्रेम करते हैं जब निवेदन करता हूँ आशीष देने के लिए खुद उपस्थित हो जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद